Hello there. Once again, welcome to the English mentoring classes for the e-summer courses. This, I believe, will be your final lecture. So, thank you right at the outset and congratulations for having successfully completed the e-summer course. Today's lecture will be a fast forward or an addition to the last time that we talked about tenses. Today, we will be talking about the future tense. As we all know, that tense is nothing but it speaks about the time described by a verb shown by its grammatical form. We all know that there are generally two tenses, the present tense and the past tense. The future tense is generally described as the future time. Okay, so in this video lecture, we'll be talking about the future tense. Let's begin. The simple future tense, or the first form of the future tense, the simple future tense, it indicates that an action is in the future relative to the speaker or the writer. Okay, so what does it tell us? The simple future tense or the future simple tense tells us that an action is in the future relative to the speaker or the reader, all right, or the writer. Now, when you're talking about a speaker, for example, I'm the speaker and I say something to you about future or about, let us say, tomorrow, the immediate future, tomorrow, and let us say I will eat Japanese food tomorrow. Now, when I say I'll eat Japanese food tomorrow, the action of eating something is in the future with respect to the speaker. Okay, to tell it to you in Hindi, मुझे लेकर के या वक्ता को लेकर के या जो कह रहे हैं या जो लिख रहे हैं उनको लेकर के जो कहा गया है या जो फिर जो एक्शन कहा गया है, जिस एक्शन के बारे में कहा गया है, जिस क्रिया के बारे में कहा गया है, वो फ्यूचर में है या फिर भविष्य में है. ठीक, एंड हेंस दिस इज द सिंपल फ्यूचर टेंस बिकॉज द एक्शन इज इंडिकेटेड टू बी इन द फ्यूचर with respect to the speaker or the writer. Clear? Did I make my point? Please understand it once again. The simple future tense or the simple form of the future tense indicates that an action is in the future with respect to the speaker or the writer. Given by the example, I will eat Japanese food tomorrow. So, when you're talking about tomorrow, you're talking about the day that is going to come after today. Alright? Well, by the way, we can also say that 3 o'clock in the afternoon today is also the future. Even then, I'm not referring to 3 o'clock in the afternoon of today. I'm actually referring to the day that is going to come after today. So, the future tense. And hence, I'm talking about an action that is eating Japanese food tomorrow. And that action is in the future with respect to me, the speaker or the writer. All right, fair enough. Let's move ahead. The future continuous tense. We all know that in the continuous tense, generally there is ing attached to the base form of the verb. Correct? Let's see what happens with the future tense. The future continuous tense is used to express what will be going on at some time in the future. ज़रा समझ लें. The future continuous tense is used to express what will be going on at some time in the future. At what time, no one knows, but in the future. So, this form of the future tense, that is the future continuous tense, is used to describe an action sometime in the future, but that action sometime in that future will be in the running form, that is will be in the continuous form. माने ये टेंस व्यवहार होता है, इस्तेमाल होता है कुछ ऐसे क्रिया के बारे में या फिर किसी ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो कि भविष्य में चल रहा होगा, भविष्य में किसी एक समय में चल रहा होगा. All right, let's take an example. You will be missing the sunshine once you are back in England. You will be missing the sunshine once you are back in England. अभी शायद दो लोग बात कर रहे हैं,
और 2 लोग इंग्लैंड में नहीं कहीं और हैं, ठीक, जहाँ पर कि सनशाइन अच्छी होती है। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को कह रहा है कि जब तुम इंग्लैंड चले जाओगे तुम यहाँ का सनशाइन मिस कर रहे होगे, मिस कर रहे होगे। सो ही इज़ नॉट येट गॉन टू इंग्लैंड, ही इज स्टिल विद हिज फ्रेंड, बट दिस फ्रेंड इज टॉकिंग टू his friend and telling him that once you are back at England or once you are back in England, you will be missing the sunshine that is here. All right, so what is the action here? Miss. Who is going to miss? The friend of this person. All right, so this person is talking to the friend and telling him or her that you will be missing the sunshine once you are back in England. करेक्ट। तो आईएनजी हो गया, मिस के साथ आईएनजी हो गया, लेकिन टेंस कौन सा है? फ्यूचर में है। एट वॉट टाइम? नो वन नोज, एट सम पर्टिकुलर गिवन टाइम इन द फ्यूचर। गॉट माई पॉइंट? सो द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस is used to describe or indicate an action that will be going on at some time in the future. Fair enough? All right. The third form, the future perfect. जैसे कि हम सब जानते हैं, the perfect tense is generally the tense which describes about an action which has been completed or which is over, ख़त्म हो गया है, पूर्ण तरह से ख़त्म हो गया है, और जो कि इट हैज़ ऑलरेडी completed its what is it called, the objective. ठीक। Now the same way, how is it possible that you are going to talk about an action which has been completed with respect to the future? But it can be done. Let's see. The future perfect tense is used to express an action that will be completed, that will be complete before another event takes place. Let's come again. The future perfect tense is used to express an action that will be complete before another event takes place. किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसके लिए व्यवहार किया जाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, एक ऐसे काम को, एक ऐसे क्रिया को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि कंप्लीट होगा, दैट विच विल बी कंप्लीट, जो कि पूरा होगा। किससे पहले? एक दूसरे एक्शन या एक दूसरे घटना होने से पहले, एक दूसरा काम होने से पहले, एक दूसरे क्रिया के बारे में बात करने से पहले। एंड हेंस व्हाट विल बी द एग्जाम्पल? बाय द टाइम आई फिनिश दिस कोर्स आई विल हैव टेकन 10 टेस्ट्स। ज़रा सोचिए, यहाँ हम लोग कहते हैं कि बाय दिस टाइम टुमारो आई विल हैव बोर्डेड द ट्रेन। मने ज़रा सा अपनी ज़बान में, हिंदी में बात करें, कल इस टाइम तक या कल इस 10 बजे तक या 11 बजे तक, जो भी, मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँगा, मैं ट्रेन में चढ़ चुका हूँगा। तो जब आप ये बात कह रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर एक्शन इन द फ्यूचर which will be complete before another action or another verb or another doing thing happens or takes place, or event takes place, and hence it is the future perfect tense. All right, let's recap this once again. The future perfect tense or the future perfect form of the future tense is used to express an action that will be complete before another event takes place. For example, by the time I finish this course, I will have taken 10 tests. जब तक मैं ये कोर्स ख़त्म कर लूँ, तब तक मैं 10 अलग अलग टेस्ट्स दे चुका हूँगा, ले चुका हूँगा, कर चुका हूँगा। All right, let's move to the final frontier, the future perfect continuous. Now, when we are talking about the future perfect continuous tense, the general sense or the general rule goes the same way it went with present perfect continuous or present perfect progressive and past perfect progressive or past perfect continuous.
The only thing, the action is in the future. Okay? It is used to describe an action that will have happened for some time and will not be complete yet at a certain point in the future. Fair and square, straight enough. यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये फॉर्म जो है फ्यूचर टेंस का, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, उसको हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? एक ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए जो कि हो चुका होगा कुछ समय के लिए, लेकिन फिर भी पूर्ण तरह से कंप्लीट नहीं हुआ होगा फ्यूचर में, किसी एक समय में, at a certain point of time in the future. Let's take an example for our better understanding. All right? I will have been watching TV for 3 hours when you arrived. अभी सोच लो, पापा ने या मम्मी ने आपसे कहा कि बच्चे मैं कोई एक मीटिंग है, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप घर में ठीक से रहना, खाना पीना करना और टीवी देखते रहना। तो आप पापा से या मम्मी से कह रहे हो कि जब तक पापा आप वापस आ जाएंगे मैंने 3 घंटे टीवी देख लिया होगा। माने यू आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन इन द फ्यूचर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, 3 hours, बट that action will not have been completed by the time you have mentioned. क्या कहा आपने कि पापा या मम्मी जब तक आप आओगे या जब तक आप आकर के घर पहुंचोगे तब तक मैंने 3 घंटे टीवी देख लिया होगा। देख लिया होगा, ऐसा नहीं कि एक्शन कंप्लीट हो गया, आप देख भी रहे होगे तब। क्यों? कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव फॉर्म लगा है, एंड हेंस एक एक्शन पार्शियली कंप्लीट हुआ होगा लेकिन कंटिन्यूअस हुआ होगा एट अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर, एंड हेंस इट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है? वंस अगेन, द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल हैव हैपेंड फॉर सम टाइम एंड will not be complete yet at a certain point in the future. For example, I will have been watching TV for 3 hours when you arrive. Got my point? Now this is all about the future tense or the 4 forms of the future tense. Having said so, it is my earnest and sincerest of request, I urge upon everyone watching the video lectures to please go through the PowerPoint presentations that I have prepared for you. Look at the examples. When you watch this video lecture or when you listen to what I am telling to you, try to watch the lecture patiently, easily, take your time, don't be in a hurry, don't be in a haste, and at the same time watch the PPT and try to understand. There are 2 columns, okay, in the graphical representations that I have posted on the PPT. You will find that there are 2 columns. One column talks about the usage, the other column talks about an example. Okay, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, मैंने व्यवहार किया कि this is used to describe an action that will have happened, so on and so forth. उसके बाद हम लोगों ने एक उदाहरण लिया, एक एग्जाम्पल लिया। उसी तरह पीपीटी में भी मैंने वही यूज़ किया है, कलर कोडिंग किया है आपके बेहतर समझ के लिए, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्लीज़ यूज़ द पीपीटीज़ टू गुड यूज़, प्लीज़ पुट द पीपीटीज़ टू गुड यूज़। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से, बच्चे याद रखो, नो वन कैन बी परफेक्ट, नो वन कैन बी बेटर इन एनीथिंग unless and until the particular learning that we have is put into use daily. It is put into practice daily. और ज़रा सा याद करें, पहले ही लेक्चर में मैंने आप सबसे कहा था, इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट द 4 pillars: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये LSRW वाला जो फंडा है, इस फंडे को अगर आप नहीं समझे और
सबसे बड़ी बात, समझे ना समझे ये और बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसको आपने अपने जीवन में व्यवहार नहीं किया रोज़मर्रे की ज़िंदगी में, आई डोंट थिंक सो, आई एम क्वाइट सर्टन you're not going to improve upon your language skills, you're not going to improve upon your communication skills. And please mark my words, prose or poetry or anything like that is not going to add too much to your language skills. Please understand, this is not literature that we are reading at the 11th and 12th level. I'm talking about the 11th and 12th level. This is the language that you are reading. So fundamentally it is very, very important and very, very imperative to improve upon your communication skills, your language skills, because it is the language that you are going to use while you write an answer. So even to score well, you will have to develop very good language skills to score marks in exams. Alright, having said so, I hope, I pray, I believe, and I'm confident that all of you have enjoyed this journey of Pragati's online e-summer course. I congratulate all of you. I congratulate all the parents for having taken part in this exercise actively and regularly. Those of you who have been putting your efforts in these times of uncertainties to learn new things, I congratulate all of you once again. All my best of wishes. I hope on behalf of the Pragati family to see you all as students inside the classroom very soon. I hope and pray to God that this video lecture and this message finds all of you in the best of health and mental peace. Please listen to the government, listen to your parents, do your work, have food, have fun, stay home and stay safe. Until the next time we meet, thank you and bye-bye.